नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारतीय विज्ञानीक आनी अभियंत्यांच्या जिद्दीची तोखणाय केल्या. तांचे खातीर देशांत संरक्षण, उत्पादन आनी अंतराळ मळार नवी तेंगशी गांठल्या अशें तांणी आकाशवाणीवेल्या मन की बात कार्यावळींतल्यान म्हळां. तशेंच तांच्यांनी आयज कारगील विजय दिसा निमतान देशाच्या शूरवीरांचो उगडास काडलो. राष्ट्राच्या धाडसी सैनिकांच्या असामान्य धैर्याचो उगडास करीत ह्या दिसा सगळ्यांचें काळीज अभिमानान फुलता अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. तांणी शहीद आनी सैनिकांक वंदन करीत तांच्यांनी भारत मातेच्या रक्षणा खातीर आपल्या सर्वस्वाचें बलिदान दिल्ल्याचें म्हळां. भारत आपल्यो तांत्रीक क्षमता सतत घटमूट करीत आसा. तांणी भारतीय नौदळांत हालींच जाल्ल्या आयएनएस महेंद्रगिरीच्या आस्पावाचो खासा उल्लेख केलो. ही आधुनीक युद्ध नौका भारतातच डिझायन करून बांदल्या. तातूंत 75% वयर साहित्य स्वदेशी आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्र्यांनी हाका आत्मनिर्भर भारताच्या वाडट्या बळग्याचें प्रतीक म्हळां. डीआरडीओन ह्याच म्हयन्यांत पिनाका लाँग रेंज गायडेड रॉकेट ह्या लांब अंतराचेर मार्गदर्शन केल्ल्या क्षेपणास्त्र प्रक्षेपकाची येसस्वी चांचणी केल्या. ह्या येसा फाटल्यान आमचे शास्त्रज्ञ आनी अभियंत्यांचे सामुहीक यत्न आसात. फकत 1-2 दीस आदीं डीआरडीओन कुश क्षेपणास्त्राची येसस्वी चांचणी केल्ली. विक्रम-1 हाचे विशीं उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें, विक्रम-1 इसके सफल लॉन्च से हर देशवासी गौरव से भरा हुआ है। हम सभी भारतीय स्पेस सेक्टर के इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये प्राइवेट सेक्टर द्वारा विकसित भारत का पहला रॉकेट है। हमारे युवा इनोवेटर्स ने वो कर दिखाया जिसकी कल्पना तक मुश्किल थी। लंबे समय तक हमारा स्पेस सेक्टर निजी क्षेत्र के लिए बंद रहा था। इस सेक्टर में रुचि रखने वाले काफी युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर नहीं मिल पा रहा था। हमने स्पेस सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर के लिए खोला। आज इसका परिणाम दुनिया देख रही है। राष्ट्रांत 7 ऑगस्टाक राष्ट्रीय हातमाग दीस मनयतले. देशांत विणकारांची कुशळटाय आनी सर्जनशीलताय ह्या दिसा मनयतात अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी फुडें सांगलें. हातमागाच्या कारागिरींक प्रोत्साहन दिवन विणकारांक मान दिवचो आनी वोकल फॉर लोकल जावपाची भावना आनीक घटमूट करची अशें ताणें सांगलें. 15 ऑगस्ट भारताच्या स्वातंत्र्य दिसा निमतान उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें, 15 अगस्त हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। ये उन असंख्य वीरों को याद करने का दिन है जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। उनके त्याग और तपस्या की वजह से आज हमारे हाथ में तिरंगा है। इस तिरंगे में हमारे संविधान के आदर्श हैं। साथियों, पिछले कुछ वर्षों में हर घर तिरंगा अभियान ने पूरे देश को एक अद्भुत भावना से जोड़ा है। नवे केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आयज आपल्या पदाचो ताबो घेतलो. आदले शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हांच्या राजिनाम्या उपरांत मंत्री जोशी हांचे कडेन शिक्षण मंत्रालयाचो ताबो दिला. हे भायर तांचे कडेन गिरायक वेव्हार, अन्न आनी भौशीक वितरण आनी नवीन आनी नवीकरणीय उर्जा मंत्रालयांचो ताबो आसा. पदभार घेतले उपरांत तांणी सोमतीच शिक्षण मंत्रालयाच्यो वेगवेगळ्यो येवजण्यो आनी मुखेल उपक्रमांच्या अंमलबजावणेचो नियाळ घेवपा खातीर बसका घेतली. हे बसकेंत शिक्षण राज्यमंत्री जयंत चौधरी आनी मंत्रालयाचे उंचेले अधिकारी हाजीर आशिल्ले. मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी सांगलें, आज सुबह चार्ज लिया हूँ। पूरा डिटेल से हमको देखना है, निर्णय लेना है, इस सब के बारे में इंफॉर्मेशन लेने का और पूरा मिनिस्ट्री समझने का कोशिश मैंने किया हूँ। मुझे विषय नया है और सीनियर ऑफिसर्स पे मैंने डिटेल में बातचीत करने का कोशिश किया हूँ। ये बहुत बड़ी डिपार्टमेंट है, इसलिए पूरा समझ के मैं आपके साथ बात करूँगा। केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी आयज मुंबयच्या नरिमन पॉयंट हांगासर आयकर खात्याच्या आयकर सिंधू ह्या नव्या कार्यालय संकुलाचें उक्तावण केलें. ह्या इमारतीच्या नांवावेल्यानूच दरेक करदात्यान भरिल्ल्या करांतल्यान देशाचो खजिनो हो महासागरा प्रमाण उबारिल्ल्याचें सिद्ध जाता अशें ह्या वेळार उलयतना अर्थमंत्री सीतारामन हांणी सांगलें. सामुहीक सहभाग हो भारताच्या संस्कृतीक जडणघडणीत सदांच शक्तीचो स्त्रोत आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी म्हळां. ते विकसीत वायब्रंट विलेज प्रोग्राम 2026च्या भाग घेवप्यांकडेन व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगा वरवीं उलयताले. हातूंत दरेका राज्य आनी केंद्रीय प्रदेशांतले प्रतिनिधित्व करपी 400 वयर तरणाट्यांनी वांटेकार जावन आपले अणभव प्रधानमंत्र्यांकडेन मांडले.
भारतीय हवामान खात्यान मध्य महाराष्ट्र आनी ओडिशांत ह्या कांय दिसां खातीर व्हड प्रमाणात पावसाचो रेड अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडल्या 2 ते 3 दिसांत छत्तीसगड, गुजरात, कोकण आनी गोंयांत व्हड प्रमाणात पावसाचो अदमास उक्तायला. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.